नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिल है। गोल्डन आई शेफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग खाने की पौष्टिकता के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है बेहतर खाना बनाया जाए, अच्छा खाना खाया जाए। इसकी मेरे ख्याल से सभी लोगों को ज़रूरत है। और पिछले 2019 के बाद से 20 से जब से कोरोना आया है तब से इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे करें ताकि स्वस्थ रहें। हेल्दी लाइफ की बात होती है। तो हमारे पास अच्छी बात यह है कि एक एक्सपर्ट के रूप में कृति जी मौजूद हैं, कृति गोयल जी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और काफ़ी समय से जो है इस विषय पे काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। तो और इन लोगों ने और उन्होंने हम लोगों के बीच में समय निकालना जो है की स्वीकृति दी है। और हमें उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम जो है इसी बात पे है कि जो हम लोगों की थीम है गोल्डन आई शेफ की 2021 की कि फूड से फिटनेस, मतलब ये कि हेल्दी खाओ और फिट रहो। तो हेल्दी खाने के लिए ज़रूरी है कि खाना भी हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी कैसे होगा ये बताएंगे कृति जी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालें, क्या करें क्या नहीं करें। तो जो आज का कार्यक्रम है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। अंग्रेजी मेरे ख्याल से डोमिनेट करेगी और हिंदी में भी बताया जाएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी। और अंत में जो है शुरुआत में कृति जी इस विषय पे जो उनके अनुभव हैं उसको शेयर करेंगी। और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट हैं वो लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसको जो समझ में आए, जो सवाल पूछना हो। तो हम लोगों के पास समय भी थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास क्या, सभी के पास समय कम है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को बढ़ाएंगे। और मैं भी जो हो ये पूरा कार्यक्रम जो है कृति जी के हवाले करता हूँ आज का, कि वो इसको आगे चलाएं, चालू रखें। और जो हमारे साथी पार्टिसिपेंट हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो है अपना माइक को म्यूट रखें। तो तभी खोलें जब क्वेश्चन आंसर शुरू हो। तो कृति जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। और अब आगे जो है माइक आपके हाथ में है। Thank you so much, sir, for such kind words. So, before I start, I would like to thank Anta Drishti organization for organizing such a wonderful event and also allowing me to become the part of this initiative. So, first of all, I'll share my screen, then I'll start with my discussion. Is my screen visible to everyone? Yeah, nobody will be able to reply you, so please continue. Okay, sir, no problem. So today we will be discussing about nutrition and its role in healthy lifestyle. So before I start this, I want to discuss one thing. Whenever I talk about nutrition with people, the most of the replies I often get is like कि okay, nutrition है तो मतलब salad खाना होगा, nutrition है मतलब घास फूस, nutrition है मतलब tasteless खाना होगा. So let me tell you, this is not like that. Nutrition is not like कि आपके खाने में टेस्ट नहीं होगा या कुछ है. You can also make your food nutrition as well as tasty. So both things can be done. So अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करें एज अ स्पेसिफिक, सो देन व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. सो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ डिजीजेस एंड इलनेस. तो हमारा जो न्यूट्रिशन है ये इन सभी चीजों का मिश्रण है कि हम क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है. तो ऑल दिस इज साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. So now question arises how to incorporate all these health benefits from food in our day-to-day life and how we can get benefited from our food that we are consuming. So if actually if we nutrition is not only about dieting or losing weight or something like weight gaining or weight losing, rather it's more about the holistic approach. So it's not only the food we are eating,
Rather, there are various components which constitute the nutrition science. So the main components, if we talk in general, are the food we eat, what kind of food we are eating, what are the ingredients we are choosing to make our food. Then second is how much quantity of food we are consuming. Suppose it varies from person to person, from age group to age group, from culture to culture. So it all depends on the various factors, like how much proportion, like supposedly we can say the proportion of a food that a particular child can consume may vary from the person who is an adult. So we should also have a knowledge about the proportion of the food that we have to consume. Then another factor is the way in which we are cooking a particular food. Like there are various methods of cooking in which we can cook, like boiling, baking, etc. So way also affects the nutritional quality of the food. Then when we talk about the nutrition, then the major important part is the nutrients. So because nutrients are the main component, these are the essential organic compounds which are act as a beneficial sources from where we get the nutrition. So there are various nutrients which has been classified, which includes carbohydrates, proteins, fats and lipids, vitamins, minerals and water. Yeah, water is also a important nutrient, though it is very much ignorant and people don't know much about this component as a source of nutrition. But yes, water is also being considered as a nutrient. So now I will be talking about various sources from where you can get all these nutrients separately. So let's start about the carbohydrates. Carbohydrates are basically divided into two parts: complex and the simple carbs. So complex carbs are basically the whole grains. हमारे मोटे अनाज जैसे रागी, बाजरा, गेहूं. So all these come under the complex carbs. And if we talk about the simple carbs include your refined sugars, your beverages, which gives you mostly the empty calories. So that's why you must have heard people saying like ki don't eat carbs. Actually you should have a knowledge about the different types of carb, whether it's a complex carbs or a simple carbs. So that is very much important before consuming anything. Then comes the proteins. We all know that these are the building blocks of our body. And proteins you can get from various sources, like your pulses, your lentils, your oils and oil seeds and nuts. And if you are non-vegetarian and you consume egg, then egg is the wonderful source of a protein. And you must have heard about the ad saying Sunday ho ya Monday, rose khao Monday. So yes, egg is a wonderful source of protein if you are a egg consumer. Apart from that, you can consume protein from meat sources, and fish you can consume for the proteins. And if you are a vegetarian, then it's not a क्वेश्चन लाइक अगर हम वेजिटेरियन है तो हमें तो प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, या फिर हमारे में तो प्रोटीन क्वालिटी अच्छी जाएगी नहीं. It's not like that. You can always have a good protein even from the vegetarian sources. Like you can consume soya bean, you can consume moong is a very good sources of protein. Milk and dairy products you can consume if you are a vegetarian. Then we have fats. Yes, fat, there are various sources of fats. Actually if we talk about fats, then people mostly come to the conclusion of like ghee, तेल, ये सब दिमाग में आते हैं फैट्स का सुन के. बट देयर आर अदर सोर्सेज, लाइक फैट्स कम फ्रॉम टू सोर्सेज. वन इज द विजिबल सोर्सेज दैट वी कैन सी इन आवर फूड, लाइक घी, तेल. ये सब हमारे विजिबल सोर्सेज जिन्हें हम डायरेक्टली देख सकते हैं. Second one is invisible sources of fats. Invisible sources includes your avocado. Avocado includes good fats. Then your nuts and oil seeds, in which they have good quality of fats and you can consume it. So there are various sources from which you can get fats. Then vitamins, if we talk about vitamins, then you can get your vitamins from various vegetables, various fruits, vegetables. Nuts and oil seeds also have vitamins, and there are basically 12 vitamins have been defined, in which two vitamins, vitamin B and vitamin C, are water soluble. So these B and C vitamins you have to take much care while you are cooking. So I'll discuss about that later on. And other vitamins A, D, E, and K, these are fat soluble vitamins that you have to also look after while you are cooking your food. So these are the 12 vitamins you can
see here. Then comes the minerals. There are various minerals you can get from various fruits and vegetables. These minerals are very beneficial as they have various functional properties. They have antioxidant functions which helps you prevent various diseases and helps you maintain the healthy lifestyle. So major minerals that we can focus are calcium, iron, magnesium, zinc and potassium. Iron is one of the most important mineral because in our country there are mostly the prevalent problem of anemia in our females. And also if we talk about the calcium is important for our bones and it also prevents the problem of osteoporosis and all. So you have to keep in mind that your food should provide all the essential vitamins and minerals and along with the other nutrients. Then comes the water. Water, yes, it's as I have already told, water is also an important nutrient if we talk about the health benefits. And what are the benefits you can get? It's just not like कि आपको प्यास लग रही है तो बस प्यास बुझाने के लिए है या फिर you must have heard कि गर्मी है पानी पियो लू चल रही है you have to drink more of the liquids. So yes, water basically helps you maintain the electrolyte balance in your body. So there are various other functions like it helps in the lubrication. It helps in maintaining the body temperature. Just now I have given you the example of ki garmi hai, you have to keep your body hydrated. So the process of sweating is due to this the nutrient water. So that's how water helps in temperature regulation. Then the cell health, it helps in maintaining the cell integrity in your body. Then the nutrient distribution, it acts as a transport medium, and through this water the nutrients are absorbed from your body and travel throughout your body with the help of this water. Then the waste elimination. Waste elimination is also being conducted in the presence of water only. So you now you can see that water is just not a anything that you can just drink and leave it aside, but you have to keep it in mind that water is also an important nutrient that you have to look after. Now, we have discussed about carbohydrate, proteins, fats, everything. But the point comes like how to incorporate all these nutrients in your daily diet. So the answer is balanced diet. Now, what is this? It sounds quite horrible or something. No, it is not like that. Balanced diet is very simple. As you can see in a picture, balanced diet includes a picture is showing a thali, which includes all the foods like it includes cereals, it includes meat and meat products, it includes milk and milk products, fruits and vegetables, everything in a single thali. So balanced diet is basically you have to make a balance in your diet. Then if we talk in terms of a technical language or a scientific term, the balanced diet is the diet which contain adequate amounts of all the necessary nutrients that are required for the healthy body and your bodily activities. It should contain good quantities of carbohydrate, it should contain good quantity of proteins and vitamins, minerals, fats, everything should be in a good quantity so that your body can perform all the adequate bodily functions in a good manner. So it's basically a wholesome diet if we talk in a single term. So balanced diet basically, as I have already discussed, it should include all the food groups. Basically, in nutrition science, foods are divided into food groups. Food groups means it is divided into cereals and cereal products, which include your whole grains, pulses, millets, etc. Then comes the vegetables, which includes your vegetables, green leafy vegetables, roots and tubers like potato, sweet potato. Then your fruits include your papaya, apple, etc. Then milk and milk products, which also includes cheese, yogurts, etc. Then meat and meat products, and lastly the fats and oils. Now, as we have already discussed about the balanced diet, but what the question people usually ask, like, why is it necessary to maintain a balanced diet in your daily life? So, I will discuss why you have to maintain a balanced diet. So, first one, it helps in maintain the weight control. People mostly talk about like when I have already told कि जब मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अच्छा हमें वेट लूज करना है तो ये हमें या वेट गेन करना है तो this is balanced diet which helps you maintain your healthy body weight.
then it prevent various illnesses in your body. Like if you consume a good quantity of nutrition in your diet, you includes all the nutrients in your diet, then it will help you prevent many diseases. As we are seeing today, corona, everyone is talking about the immunity thing. And immunity, when we talk about, then people are looking forward to the immunity boosting foods, which includes our turmeric, our spices and condiments. They are saying eat more of the antioxidant rich foods. So all these foods are the major sources of nutrients which provide various health benefits and helps you maintain a good immunity in your body. Then it keeps you energized, it fuels up your body, boosts your immune system, supports heart health, provide all the important nutrients to your body. Now, we have already told about the balanced diet and this thing, but as I have already told कि हमारे जो nutrients हैं वो बहुत ज़्यादा sensitive हैं, क्योंकि कुछ वाटर soluble vitamins हैं, कुछ fat soluble vitamins हैं. So there are various methods की जिससे इनका loss, food loss हो सकता है when you are cooking. So you have to keep it in mind कि आप cook तो कर रहे हो, but whether your nutrients are retaining in your food or not. So there are various ways to reduce these nutrition losses. Like when you are peeling your fruit or a vegetable, you have to peel it as thin as possible so that you can retain more of the nutrition in the edible portion. Then second is thing is when you cut or chop vegetables or fruits, try to chop as big size as possible, because the more you small sizes you will cut your fruit, the more it will come in the contact of oxygen, and it will get oxidized and reduce its nutritional quality. Then third point is very important for all the home cooks and the chefs that you have to keep in mind. It's like don't soak vegetables for too long, or specifically when you have already cut. Rather wash your vegetable before peeling or chopping, or just put in the soaking water and use that water for further preparation. Supposedly you are boiling dal, or you are boiling any fruits or any vegetables, and that water that retains in the your utensil, it have all the least water soluble vitamins, that is vitamin B and vitamin C. So that water that is in your pot is already retaining very large amount of your nutrients. So don't just throw it away, rather use it in making curries or any gravies, or further use it to make some soup or anything. Now, there are various cooking methods that you can use to avoid the nutrient losses you have come across. First one is the baking. You can bake food, boil food, braising, steaming, and grilling. I'm not saying कि you don't eat fried foods or anything. Rather, I'll recommend कि आप खाओ fried foods, खाओ. That's not an issue कि you have to completely restrict your fried food intake, because yeah, fats are also necessary for your body, but you have to limit the fat intake in your diet. So we were talking about the cooking methods. So as I have already told, you can incorporate various cooking methods according to your requirement, but just I will recommend rather to use most of the healthy cooking methods like boiling, baking, and try to avoid the shallow deep fat frying, and opt for shallow fat frying if you want to eat some fried foods or anything. Now there is one thing, there's very interesting thing I have often come across. Like people mostly talk about कि हमारा बच्चा मटर नहीं खाता, एंड वे बहुत चूजी है, वेरी पिकी ईटर है. So it's not like कि adults are not picky eater, even our elders are picky eaters and our children are picky eaters. So what we can do, we can, I will say, home cook or home chefs have this magic trick that they can don't allow the children or the elderly people to know what they are eating. It sounds interesting actually. What you can do, you can just play hide and seek with your food. How you can play hide and seek with your food, you just whatever food or vegetable or fruit that your children or your elderly don't like to eat, just puree those vegetables or fruit and mix it with your atta or your flour and make a dough out of it, or from that dough you can make puris, paratha, roti, whatever. And
as we all know that the children mostly like to eat pizzas and burgers. So these are not like they can't be a nutritious pizza or there can be no nutritious burgers. You can make healthy nutritious burgers and pizza as well, so that they can eat whatever they like, and that to provide the nutrition to them as well. And if we talk about the elderly people, then they are very strict about their dietary habits. They don't like to eat. If you say कि doctor told कि you have to try to restrict your food habits, like you have to eat more of the green leafy vegetables, or you have to eat oats. So, but they are like, we can't eat. We only like dalia and we only like khichdi. So, if they are like that, then you can also provide nutrition in their particular specific food, what they want to eat. You can just follow the similar method, just puree all the vegetables and the fruits that are good for their health and mix it with their khichdi or dalia preparation. And that's how you can provide a particular nutrition to their food or nutrition in their diet. And also, if you want to add oats, you can just simply blend them in a mixer, make a powder out of it, and mix it with flour, mix it with halwa, mix it with laddu preparation, whatever you like. That way you can also relish your authentic food recipes like laddus, khichadis, dalia, and also enjoy the taste as well. Now this is a small little bit story kind of thing. I'll back to the main concept. Now we have already learned about the cooking methods and everything. Now the point is whether the nutrients, हमने nutrition food पता कर लिया कि ये nutritious है, ये नहीं है, हमें ये खाना है, ये नहीं खाना. देन कम तक कि हमने जो खाया है उस वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा. मेन पॉइंट इज दैट हम कैल्शियम सोर्सेज ले रहे हैं, हम मखाने खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग, but still our calcium level is low. We are consuming iron rich food, but still our iron level is low. So that's where the concept of nutritional bioavailability is made. So nutritional bioavailability, basically it's like whatever food we are ingesting, whether it is absorbed in a good way in our body, so that we can maintain a good physiological functions with those nutrients. Now, there are various methods by which you can increase the bioavailability of these nutrients in your diet. First of all, it's like you have to include variety of foods in your diet, and it's not only कि आप regularly सिर्फ चावल ही खा रहे हो, या फिर आप regularly सिर्फ you are on roti or wheat based diet. You have to include everything. You have to include millets, you have to include cereals, pulses, everything you have to include. And if one important thing in that, if you are making khichdi, khichdi is very popular in our nation. As you we have already know, we Indians love khichdi very much. And but this is also scientific. When we mix cereals and pulses together, then this is mutual supplementation of nutrients. Now what is this mutual supplementation? Mutual supplementation is there are some nutrients which pulses lack in it, there are some nutrients which are cereals lacking. So when we combine cereals like rice with pulses, that is our dal, together, then those nutrients come together from different sources, and as a whole we are getting all the nutrients with the help of our khichdi. So that's how you can combine variety of fruits and get the different nutrients in your diet. Then second thing comes the pair vitamin C rich foods with iron. Now what is this thing? You must have heard like whenever you eat methi ki bhuji, or you eat anything iron rich foods like spinach or palak paneer, most famous dish we all love. And or we use some rajma or anything we make. So mostly people prefer to add some lemon to it. So it's not only about the taste, it's also about the nutrition, because iron that is present in our green leafy vegetables or in rajma, it when combines with vitamin C in Nibu, it helps to increase the absorption of your nutrients present in your food. So that's why we have to know what to pair with the different foods when we are cooking or planning for any recipe. Now then comes the point next is include healthy fats in each meal. Now as we have already told about the fats and various fat sources, now there are comes the terms the healthy fats and the bad fats.
So bad fats basically, if we talk in specific, are the hydrogenated fat, like saturated fat or the trans fat. Earlier, we people used to eat vanaspati, which is a trans fat, saturated fat that has to be completely inhibited, restricted in your diet. Rather, choose healthy fats like the fats from your nuts and oil seeds. You can use sunflower oil, you can use safflower oil, you can use olive oil, you can use mustard oil, you can use ghee. I won't say like completely restrict using ghee, because ghee also having its good nutritional value, it has its own benefits. But the main point is, you have to know, you have to understand the quantity, the proportion of a particular fat that you have to include in your diet. So the knowledge of the quality and the quantity is very important if we talk about the fats. Now the next point is, avoid drinking teas and meal times. Yes, you have to avoid drinking teas, because tea and the coffee, these tea and coffee include polyphenols, and which are tannins, are phytates, are caffeines. So what these components does, जब हम कोई मील खाते हैं, हम अपनी सपोजिटली हमने कुछ हेल्दी मील लिया, उसके साथ हमने अगर चाय या कॉफी ले ली, तो जो फाइटेट्स और ये पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट हैं टी में, ये हमारे न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे। ये हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हम भले ही ले रहे हैं अपनी डाइट में न्यूट्रिशन, बट वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। सो इट गो वेस्ट इफ वी आर कंज्यूमिंग healthy food with tea or coffee. So you have to keep it in mind while you are eating. Don't just eat as it is. Be wise while you are eating anything. Now, lastly, you have to take a break from caffeine and alcohol. This I have already told the caffeine and alcohol, caffeine thing. Alcohol, we also know it's not good for health. As it is also been, if we talk about our Indian food pyramid, they have mentioned it. We have to completely abstain alcohol from our dietary habits. So you have to keep in mind what you have to eat, how you have to increase your nutrient absorption. So all these things you have to uh, put you in your list while you are eating or preparing any recipe, so that it can be tasty and a nutrition side by side. So if we conclude about the bioavailability thing, then the main point is, you have to include plenty of fruits and vegetables, so that you have because these fruits and vegetables have natural food enzymes, have natural digestive enzymes, which helps you maintain the good gut microbiome in your body and helps you maintain the healthy lifestyle. Now there comes the concept of energy balance. Actually, when we talk about the weight management thing, people usually say कि हम तो ज्यादा खाते ही नहीं है, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। हम पूरे दिन बस एक रोटी खाते हैं, हम पूरे दिन सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। So it's not only about how much you eat और how you are eating, it's about कि आप जितना खा रहे हो, आपकी बॉडी में उतना वो यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, बिकॉज ऑल द कैलोरीज यू आर गेटिंग फ्रॉम फूड, दैट हैज टू बी एक्सपेंड इन अ राइट वे to maintain a healthy body weight. So that's how the concept of energy balance told you about. Whatever calories you are taking in, you have to make the balance with the calories you are taking out from your bodily activities, your physical activity, everything you have to keep it in mind, not just only the food. Now, as I have already told you now कि फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल एक्टिविटी भी हमें करनी है, ये नहीं कि हमें क्योंकि हम स्लिम हैं या फिर हमारे साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट एनी कोमॉर्बिडिटीज इन आवर बॉडी और एनीथिंग, बट still we are eating healthy, that's not enough. Only eating healthy is not enough. You have to do a physical activity, and also a good physical activity. I'll tell you a story with this also. Whenever I often go to any party or something, the ladies, specifically ladies, they are like we want to lose weight. एंड आई से ओके आंटी, जस्ट टेल मी कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो डेली, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो एक्सरसाइज में. तो दे आर यूजुअली लाइक कि दे रिप्लाई लाइक कि
बेटा हम तो पूरा दिन किचन में घर के काम में खड़े ही रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, तो हम उसमें ही थक जाते हैं। तो एंड आई स्ट्रिक्टली से टू देम कि आंटी खाली किचन में खड़े होना या घर का काम करना इज नॉट इनफ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. यू हैव टू स्पेयर एटलीस्ट 45 to 60 minutes of your daily in intense physical activity, which can be either your Zumba. If you love dancing, do dancing. If you like Zumba, do Zumba. If you like yoga, do yoga. And it's not only about at a stretch you have to spend your time in exercise or anything. If you can't spare complete 1 hour together, you can break your time. 30 minutes you do in the morning, 30 minutes you do in the evening. But spare time for exercise and physical activity, because good health is not only about good diet only contributes about 70% to your good health, rather 30% is still your physical activity that you have to do, and that should be maintain a mandate in your daily life to maintain a good healthy lifestyle. Now, if we conclude about our nutrition knowledge or anything, what to do, what to not to do, and what foods you have to eat more, what you have to eat less. So I'll conclude here. The more you have to consume are fruits, your vegetables, berries, fish and shellfish. Fish I'm saying because fish have the lean mass, so it don't consume much more to the fatty tissues. Then comes the nuts and oil seeds. Then exercise is a mandate that you have to opt in your daily life if you want to achieve a healthy lifestyle. Then switch to whole grains. So whole grains हमारे millets. People, if we talk about millets, they don't know. They know कि हाँ रागी खानी है, बाजरा खाना है, वो भी सर्दियों में, क्योंकि वो सर्दियों में गर्म अनाज होता है, वो सर्दियों में खा सकते हैं. बट हम एक मिलेट है व्रत में, आपने सुना होगा समा के चावल. इट्स वेरी फेमस फॉर फास्टिंग फूड. समा के चावल, that is known as the barnyard millet, that is also a millet. So you can consume variety of millet there. Apart from ragi, bajra and barnyard, there are variety of millets available. And सबसे important चीज ये हमारी Indian origin है. So we are much more towards quinoa and oats and things, but we are not very much familiar with our own Indian millets. Like so हम रागी, बाजरा, samak, then finger millet, then we have proso millet, little millet, and also cholai. Cholai is also very good for health. You have to consume that in your diet. Then your healthy fats that I have already told, avocado give a good amount of fat. Your nuts and oil seeds like walnuts, your badam, you can eat those. And you can eat variety of oil seeds like pumpkin seeds, your sunflower seeds, your melon seeds. All these provides a good quantity of nutrition. And the most important thing is when you eat these melon seeds, your these nuts, that they provide a dense form of nutrient. So when you consume in even a small quantity of these nuts and oils, you will get a good quantity of nutrition. To try to incorporate all these things in your recipes, like you can blend these nuts and oil seeds and mix it with your cutlet or in your flour and in your gravies while making any recipe. You try to use low fat dairy products if you are trying to avoid the fat as per your medical conditions or any dietary regime. Then less of red and processed meat. Yes, less of processed and red meat, because the meat contains lots of cholesterol and such good LDL. That is, LDL is the bad fat that we are considered to as per the nutrition guidelines. Then adequate amount of salt and sugar. You have to try to maintain a good quantity of balance while you are eating salt and sugar. If we talk about salt, so adding salt over your dish, अलग से आप ऊपर से नमक डाल रहे हो while eating salad, अलग से fruits के ऊपर आप चाट मसाला डाल रहे हो. So all these provide you extra salt. आप जस्ट कुक कर रहे हो, जितना सॉल्ट आपने डाला है आपको उतना ही डालना है. ऊपर से सॉल्ट अगर आप डालोगे, दैट में लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड आपको बीपी प्रॉब्लम हो सकती है. If we talk about sugars, then sugar, yes, people mostly have a misconception कि शुगर खाने से डायबिटीज होती है. नो, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती. If you are having a diabetes and then you are eating sugar, then it may aggravate your symptoms. But if you are eating sugar in good quality, in good quantity, and not just overeating
सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू जस्ट हैव टू break the misconceptions and know the quantity you have to eat. There are government have designed the specific guidelines, the amount you have to daily consume in your diet. So just have a knowledge about all these and then try to include all these things in your diet. Just don't believe on Google Baba and this thing, because Google is not the nutritionist or a dietitian person. वो वहां पे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सही होगा, बहुत कुछ गलत होगा. तो it's just you have to know the basic from where you can get the authentic information, from where you can get the scientific information. And if you are diabetic, be very cautious about your diet, because even a small quantity of sugar may aggravate your symptoms. So depending upon your sugar levels, depending upon your body fasting glucose levels, maintain your diet. And yes, diet is very important for the management of a diabetes. बिकॉज आप डायबिटीज आर अगर हम बात करें तो डायबिटीज के लिए इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल. So you have to maintain a very good knowledge about your diet while eating anything. Just include nutritious food, and I will say just avoid these alcohol in your diet. This will not only lessen your nutrient absorption, rather it will also affect your health. So thank you so much. Last but not the least, I will say only one thing. Nutrition कोई magic नहीं है कि आज किया and you will see result tomorrow and it will goes like this. Rather, it's a long term process. You have to daily invest your good nutrients in your diet so that you can get long term expenditure and a good health benefits from the food. So thank you so very much for your time, for sparing time for this lecture, and giving me the opportunity to share my knowledge with you all. So stay safe, stay healthy, and be fit. Thank you so much. शुक्रिया कृति जी. अब मैं तो क्या बोलते हैं, क्या करूं, पहले तो होस्ट को रिक्लेम कर लूं फिर उसके बाद करते हैं. तो आप सभी लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अगर किसी के पास कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का नहीं, जो आज बातें हुई हैं इसको लेकर के, तो आप उसको पूछ सकते हैं. कृति जी अभी हम लोगों के साथ हैं थोड़ी देर, और उनका धन्यवाद करते हुए It's my pleasure, बहुत sir. अच्छी बातें बताई हम लोगों को जो कि अभी तक तो नहीं पता थी. और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे सवाल आप लोग पूछिए, ताकि जो है कृति जी बार बार हम लोगों के साथ जुड़ती रहें और अपने जो ज्ञान का भंडार उनके पास है वो हम लोगों से भी शेयर करती रहें. जी दिनेश जी. हेलो सर, नमस्ते जी. हेलो. हाँ बताएं, बोलें. अखिल सर, मैंने मैडम से क्वेश्चन पूछना है. हाँ मैडम से पूछिए, मैडम है अभी यहाँ पे. पूछूं? हाँ दिनेश जी पूछिए सवाल. मैडम, जैसे आजकल डायबिटीज को लेकर के है, ठीक है, Yes, कि sir. एक कंसेप्ट गलत धारणा है या सही है कि जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट जिसे शुगर है उसे नहीं खाना चाहिए, तो ये किस हद तक ठीक है या गलत? ओके. तो दिनेश जी, अगर हम डायबिटीज की बात करें और फ्रूट्स को देखें, तो इट्स नॉट कि हर फ्रूट आप खा सकते हैं. ऑब्वियसली देयर आर रेस्ट्रिक्शन कि आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते, बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट. सो आई विल टेल, you are a diabetic, try to avoid most sugary fruits. Like you can eat peaches, you can eat citrus fruits, you can eat melons, you can but you have to avoid mangoes, because these have much more of a fructose or a sugar that can aggravate your diabetes. So you have to choose wisely. राइट So you. मैडम, मैंने टाइम टू टाइम आर्टिकल्स पढ़े, उनमें Okay. अब जो न्यू थ्योरी है मेडिकल साइंस की, वो ये Yes, sir. बोलती है कि जो फ्रूट्स में जो शुगर है वो हमारा निकल जाता है यूरिनल के थ्रू, या जब हम पॉटी जाते हैं, तो ये Yeah. कहाँ तक राइट है No, sir. या कहाँ Actually, तक?
Yeah, I am understanding your point. You are saying right, it also excretes from the body. That's why I'm saying, but all sugars can't excrete. Some amount of it will be absorbed in your body because आप food खाते हो कोई भी. I'm not just talking about the fruits. I am talking about other food items as well. तो ऐसा नहीं है कि अगर सारे nutrients आपकी body में absorb ही हो रहे हैं. They always they are also excrete from your body, but some amount and a good amount can be absorbed in your body. तो आपको लिमिट करना है अपनी क्वांटिटी की. आप ऑलरेडी डायबिटिक हो तो आप जितने से कम क्वांटिटी की शुगर आप बॉडी में अपने इंटेक करोगे तो लेस क्वांटिटी विल बी एब्सॉर्ब एंड द लेस क्वांटिटी विल बी एक्सक्रीटेड. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि ताकि आपकी सिचुएशन एग्रेवेट ना हो. एंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द डायबिटीज देन देर आर डिफरेंट फैक्टर्स. लाइक सम पीपल की डायबिटीज क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई शुगर रहती है उनको, बट कुछ लोगों के साथ क्या होता है उनकी मेंटेन रहती है. तो ऐसे केस में क्या होता है, वी यूजुअली रिकमेंड कि अगर आपकी मेंटेन रहती है एंड इफ यू आर टेकिंग इंसुलिन फॉर योर रेगुलेशन, देन आप अपनी डाइट से कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट नहीं करिए शुगर्स. इफ यू आर टेकिंग इंसुलिन या आपकी मेंटेन है तो आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं बिकॉज दैट विल बी हेल्प्स यू अवॉइडिंग द रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी बिल्कुल रेजिस्टेंट नहीं होगी फिर शुगर से. बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी डायबिटीज बहुत सीवियर है एंड आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई रहता है, देन वी से completely restrict the fruits because they contain even a small quantity of sugar can aggravate your diabetes and may be fatal to your health. So it's like that. Thank you. Yeah, pleasure sir. कोई सवाल पूछना चाहता है? Yes sir. Good afternoon ma'am. Good afternoon sir. Good afternoon. अपना Ma'am, नाम actually बताएं. I have a question. My name is Ekta Goyal. Okay. Ma'am, actually I have a question regarding junk food. Like Okay. सब लोग बोलते हैं जंक फूड इनटेक नहीं करना चाहिए, अनहेल्दी होता है डाइट के लिए, बॉडी के लिए. So is there any way that we can make junk food healthy? Yes, okay. So first let me give a brief introduction कि junk food है क्या. When we talk about junk food, then we only keep in mind like pizza, burger, fries, ये सब junk food है. No, it's not the food that is junk. It's the कि आपने किस तरीके से उसे बनाया है, क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज करे. इवन इफ सपोजिटली आप घर पे पिज्जा बेस बना रहे हो यूजिंग होल व्हीट या मिलेट्स को बेस करके आप पिज्जा बेस बना रहे हो, उसके ऊपर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हो and then you are making pizza at home, then it's not considered a junk food, it's a healthy food. So you can consume pizza, even pizzas are healthy for consuming. And if we talk about कि भाई junk food, बिल्कुल कि आप junk is like something that is making your body deteriorate. तो जो भी चीज आपकी बॉडी को नुकसान कर रही है, जंक कर रही है, दैट इज अ जंक फूड. अगर आप कोई भी फूड को हेल्दी इंग्रेडिएंट्स में हेल्दी कुकिंग मेथड से बना रहे हो, सो दैट इज नॉट अ जंक फूड, दैट इज अ हेल्दी फूड. Even a pizza, burger can be a healthy. So it just you have to choose a right ingredients, a right way of cooking. You just have a thorough knowledge of pairing of the foods. That's how you can consume a healthy so-called junk food. Thank you. Thank you so much ma'am. बहुत बढ़िया. तो सबको पता लग गया जंक फूड क्या होता है. जी सर. आप जम के पिज्जा खाइए, मोमोज खाइए. तो सवाल कुछ कम आ रहे हैं या सबको समझ में आ गया है या क्या बात है? लाइन पर कौन कौन है सर? और लाइन पे तो बहुत सारे लोग हैं. मीटिंग. अच्छा. और सवाल नहीं पूछ रहे हैं लोग, बाद में पूछेंगे. आपसे पूछेंगे भी. हमसे पूछेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है. I can always share my contact details of LinkedIn if anyone wants to connect with me. तो वो फिर अखिल सर के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकता है. मैं लिंक्डइन के थ्रू आपको कंसल्ट कर सकती हूँ फर्दर. ये जो आज की बातचीत हुई है इसको हमने रिकॉर्ड किया है और कल तक ये जो है यूट्यूब पे आ जाएगी. तो आप लोग आराम से बाद में भी जो है सुन सकते हैं, धीमे धीमे पॉज करके, जैसे भी आपको समय लगे, और सवाल पूछ सकते हैं जो भी चाहें. हमारे बीच में हम लोगों की एक महत्वपूर्ण सदस्य टीम मेंबर जो हैं गोल्डन आई शेफ की अदिति मदान जी भी हैं, तो उनका भी स्वागत किया जाए इस कार्यक्रम में और उनके भी विचार जल्दी से लिए जाएं ताकि
अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछे, और अगर नहीं पूछना है तो अदिति जी का हम लोग स्वागत करते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनघा है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी जी। मैम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जो मूंग रहते हैं, जो स्प्राउट रहते हैं, हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो वो बॉईल करके खाना है कि कच्चा खाना है, और उसमें और हम लोग कुछ मिक्स करके खा सकते हैं क्या? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये पूरा दिन हम लोग वही सेम लंच और डिनर में करेंगे तो वो मतलब जो भी है वेट लॉस हो सकता है क्या उससे? Okay, so Anaga, very good question. If we talk about sprouts, तो स्प्राउट्स मूंग की मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसे कच्चा ही खाएं, उसे बॉईल ना करें, क्योंकि जब हम स्प्राउटिंग करते हैं मूंग की तो उसमें विटामिन सी लेवल इंक्रीज हो जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी नो कि विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, तो अगर आप उसे बॉईल करोगे तो उसका वाइट न्यूट्रिएंट वाटर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लीच आउट हो जाएगा, तो उसका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप उसे कच्चा खाओ। बट इफ इन केस यू कांट ईट, और आपको बिल्कुल ही कि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मतलब आप बेमन से खा रहे हो बस एक डाइट की तरह, तो यू कैन ऑलवेज स्टीम इट रादर बॉइलिंग। जस्ट स्टीम योर मूंग स्प्राउट्स एंड यू कैन कंज्यूम इट। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड कि उसमें टमाटर, उसमें खीरा, उसमें प्याज, नींबू आप ऐड कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो एनरिच इट। इट्स नॉट कि आपको खाली मूंग स्प्राउट्स ही खाने हैं, आप चना का स्प्राउट्स बना सकते हो, तो आप मूंग का खा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मूंग का ही खाना है, और या फिर आपको सिंपल उसे कच्चा खाना है। आप बॉईल करके स्टीम खा सकते हो, स्टीम खाओ, कच्चा खा सकते हो, कच्चा खाओ। बट ऑब्वियसली मोर न्यूट्रिशन विल बी रिटेन कि अगर आप उसे कच्चा खाओगे, एंड आप उसके साथ नींबू टमाटर वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो, उससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव ही होगी। तो एंड एज यू आर सेइंग कि आप होल डे वही खाते हो, तो आई विल से इट्स नॉट गुड। यू जस्ट हैव टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड्स इन योर डाइट, क्योंकि खाली मूंग से आपको ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और यू विल फेस सम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डेफिनेटली इन लॉन्ग रन। So try to include good quantity of nutrients in your diet apart from just moong. And also you are saying कि हम वेट लॉस वाली थिंग, तो खाली एक टाइप की डाइट से वेट लॉस कभी नहीं होगा। यू विल फेस अदर बॉडी वेरियस अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। अगर वेट लॉस हो भी गया तो फिर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अ गुड हेल्थ। तो ट्राई टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड्स इन योर डाइट, एंड that will help you maintain a good healthy body weight and do physical activity daily. That will helps you improve even faster. Thank you. थैंक यू। चलिए, बढ़िया है। कुल मिला के आज की बातचीत बहुत अच्छी गुड रही। आफ्टरनून मैम। गुड हाँ जी, आफ्टरनून बताएं। सर। जी जी, I बताएं। guess someone is also. मैम मेरा क्वेश्चन था ड्राइनेस को लेकर। मैम जैसे हम पूरे दिन में बहुत मतलब पानी भी कंज्यूम कर रहे हैं और Okay. स्प्राउट्स वगैरह भी ले रहे हैं, उसमें सोयाबीन प्लस मूंग की दाल सब कुछ ले रहे हैं मैम, उसके बाद भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है मैम, मतलब वो फेस से पता चलता है और बॉडी में भी। तो हम इसके लिए हमें Okay. और क्या इंक्लूड करना चाहिए अपनी फूड में? Okay. For dryness, I will say you are saying कि जी आप water अच्छी quantity में ले रहे हो, sprouts खा रहे हो, that's जी very good. But apart from that, try to include more of fruits and vegetables. Vitamin C, citrus fruits आप include करो, you will see the difference in this dryness thing in your body. they बहुत help करेंगे, and थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहो। आई एम नॉट सेइंग कि नुकसान है या फायदा है, बट वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, तो ये आप कर ही सकते हो कंटिन्यू। बट इसके अलावा अलग और जो फ्रूट्स हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। हेल्दी फैट्स, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ फैट इन इट, सो दिस विल हेल्प यू cure this dryness thing. To try to incorporate all these things in your diet, and I hope you will see the difference in your skin. यहाँ जो पार्टिसिपेंट, मैम हाँ मैम ज्यादा वाटर मतलब ज्यादा हम उसमें मतलब क्वांटिटी में लेते हैं तो उससे भी कुछ मैम प्रॉब्लम होती है क्या? यस डेफिनेटली। अगर आप ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हो देन इट विल पुट प्रेशर ऑन योर ब्लैडर, तो आपकी बॉडी में जी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना ज्यादा कंज्यूम करता है। यू इफ यू आर टेकिंग, इफ वी टॉक अबाउट द गाइडलाइंस, देन इट सेज कि 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे,
everyone has to consume for a good water balance in your body. तो आप लिमिटेड क्वांटिटी अच्छे से पियो कि आप हाइड्रेट रहो, एंड अलग फ्रूट्स वगैरह खाओ तो आपकी बॉडी, और फाइबर होता है क्योंकि उसमें तो वाटर वो एब्जॉर्ब करेगी, तो आई डोंट थिंक सो यू विल फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्रिंकिंग और एनीथिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ जो हम लोगों के पार्टिसिपेंट हैं इस बार गोल्डन आई शेफ में, उसमें काफ़ी सारे एथलीट वगैरह भी हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं, तो इस सवाल जो है आने लाजमी थे। मैं सोच रहा था कि अभी तक आए नहीं, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। टाइम काफ़ी हो रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा होने वाला है। तो अदिति जी हम लोगों के बीच में हैं, तो क्यों ना उन्हीं से जो है रिक्वेस्ट की जाए कि कंक्लूड करें इसको जो है जल्दी जल्दी। हाय कृति, अदिति जी वीडियो ऑन करिए अगर कर सकती हैं तो। अभी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम समवेयर एल्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I was watching Krati throughout, and thank you so much, Krati, for coming here. And Pleasure, ma'am. Yeah, everyone giving time and everything. I think there's a question, Krati, from Arjab Mehta. There's a connectivity problem, so he can't unmute his mic. So he's asking about that his father is having diabetes, but is very fond of rice. So Okay. can we give rice to him, or like please suggest regarding that? Okay. So if we are talking about diabetes and the rice, so firstly I would say कि try to just avoid much more quantity of rice. But even if you want to give a little quantity, तो आप उनको without मांड वाला चावल खिला सकते हो, because मांड में starch निकल जाएगा. So that way it will lower its glycemic index and you can give it to a diabetic patient as well. But not too much of the rice. Just include small quantities in your diet just for enjoying the taste of rice or anything. मैम राइस से मुझे मेरा और एक क्वेश्चन है, जिसको Yes. डायबिटीज नहीं है और राइस ज्यादा खाने से उनका वेट बढ़ता है या? हाँ, okay. So basically the concept of rice is like a starch. So it has a starch in it. So whenever you consume more of the rice, then you can face problem of weight gain, but it's not only the positive factor. So it's like a controversy thing कि rice खाने से weight बढ़ता है, कुछ का नहीं बढ़ता है. तो I will say कि not only completely depend upon the rice. You can include rice in your diet, but try to avoid if you want to weight lose. Okay, so thank you so much, Golden Eye Chef Antardrishti and Krati Goel. So lovely having you here, and Thank it you, was ma'am. amazing. So many things that has got revived, and definitely I will also take care in my food habits and food culture as well. So thank you so much. Thank you everyone. Thank you all participants of Golden Eye Chef, and yes, all the best to everyone. ओके जी, थैंक यू। फिर हम लोग आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे। कल ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए लिंक के साथ। तो जो भी क्वेश्चंस आए आप लोगों के दिमाग में अभी दोबारा से या कल दोबारा से देखने के बाद समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं तो और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार फिर से कृति जी को हम लोग यहाँ पे बुला सकते हैं ऐसे किसी कार्यक्रम में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को। थोड़ा थोड़ा सब खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए। मुझे तो यही समझ में आया बातचीत से कि थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। Definitely. और खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, शुक्रिया। Thank you so much, thank sir. you.